Hello and good afternoon, everyone. Welcome to the Gardening Talks featuring the Plantomaniac. Today, we will be answering some basic questions related to soil. And to answer them for us, we have Mr. Aditya Baga joining us today. Hello, Aditya. How are you? Hello, ma'am. Good afternoon. How are you doing, I'm good. So, welcome to the Gardening Talks, Aditya. ma'am? It's a pleasure to have you with us once again. Thank you so much. Really working with you guys. Yeah, so before also we had a workshop with you talking about science behind soil. So Yes, we ma'am. thought you were the right person to ask a few questions related to soil this time. So I would like to tell you a little about Aditya. He is a veterinary student and a very passionate plant parent, and he shares a lot about plants on his Instagram page. The handle name is underscore the underscore plantomaniac underscore. So please go and check out his page for more knowledge and about science about plants and scientific facts behind plants. So before we start, Aditya, we'd like to know a little about yourself. Myself, Aditya Baga, and I'm 20 years old. Uh, gardening to me, literally a world to me. To me, gardening is my certainty, my happy. While talking about gardening, I get so excited and so and talking about myself, I am doing generally the course of veterinary doctor from Khalsa College, and priorly I was a student at university doing BSc honors in agriculture. So both passion took me to that course, but now due to some life course, but yes, the hobby which stays in our heart stays forever with us. Well said, Aditya. Okay, so let's begin with our questions for today. For sure. And yeah, I would like to just tell you one thing before we start. There's a little lag in the voice, and if you can speak a little louder, some words are not heard clearly. So if you can speak a little louder, our viewers will be able to hear you clearly. So, Okay, ma'am. moving on to Okay. our first question for today. What soil to use for roses in pots? Okay. So basically winter plants, and they do bloom in summers as well, but they are majorly the winter. So for the basic rule for winter blooming plants is that we need, and the pH of the soil should be slightly acidic to neutral. That means between have the pH paper, dip that into the solution of the soil, and then check the pH should be around 6 to 7, like acidic to neutral. And the mix for roses is like ideal mix, which I preferly use, or which it should have 20% of the soil, and then 30 to 20%, somewhere around this much of the soil. That is the alluvial soil or the general potting mixes that you get, or that you get from the local nurseries, Mali. Okay, and 30% cocoa peat, vermicompost. So vermicompost is very important for roses. What more you will give, like generally people say it this way, कि जो वर्मी कंपोस्ट होता है दैट गिव्स देन कई ऑल ओवर ग्रोथ भी देते हैं, बट जनरली वर्मी कंपोस्ट नाइट्रोजन ग्रोथ देता है कि जितनी ज्यादा फोलियर ग्रोथ होगी उतनी ज्यादा बर्ड जाएंगे और उतनी ज्यादा फ्लावरिंग होगी. एड ऑन में यानी कि एक्स्ट्रा फीड करना है फॉर मोर ब्लूमिंग ऑफ द रोजेस, you can have Epsom, like a miraculous gift for roses. Like Epsom salt डालने से roses में like and which gives really good results. So these are the basic points. Like while growing roses, you grow best in open land. But when you are growing it in pots, it should be very this the soil should not be very tight. It should be loose and be with
a lot of flow in it, and pH should be kept in mind. Yeah. Thank you so much, Aditya, for explaining so well about roses. Okay, so let's go on to our next question. That is, what soil to use for vegetable garden? Okay. So all new concept for vegetable gardening. वेजिटेबल गार्डनिंग नेशनली जैसे शुरू से चलता आ रहा है, vegetable gardening should be done on land to the paucity of the spaces in towns or in the cities. We have शौक है तो करना तो है ही है, तो वेजिटेबल गार्डनिंग हम आजकल गार्डनर्स आर डूइंग इट, many successful gardeners and many home gardeners are doing it, और vegetable garden. So बेसिक रूल है उसके लिए कि जो लैंड में हम यूज ही सॉइल यूज करनी चाहिए, बट लैंड में न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज्यादा होता है प्लांट्स के लिए, वही सिंपल सॉइल यूज कर सकते हैं. एंड मोर ओवर वी कैन गिव सम एड-ऑन्स, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा कंपोस्ट, एक्स्ट्रा वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी फर्टिलाइजर्स हम दे सकते. बेसिक लाइक what I practice is, you may see on my Instagram page as well. Right? So I am doing the vegetable gardening. I have took a water tank, one usko cut करके I have divided into 3 portions, और उनमें different मैं. तो what I have done is I have made layering, like हम diagram देखते हैं, rock bed, soil, this is, we have tabular form, है ना. So in they are doing it in the large space, like I do in my can make layers. So first layer should be of any detritus, and detritus means ते जैसे सड़े गले पत्ते हमारे गार्डन में पड़े होते हैं, या फिर ट्विग्स पड़ी होती हैं, ये सब डेट्रिटस में काउंट होते हैं. डेट्रिटस यूज कर सकते हैं हम फर्स्ट लेयर में, ताकि डालें वो सारा उस डेट्रिटस में एब्सॉर्ब हो जाए और वो अल्टीमेटली डीकंपोज होकर कोई हमें मिनरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाए. नेक्स्ट लेयर हम रखेंगे सिंपल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल हमारे पास होती है, जो कि जनरल पॉटिंग मिक्सेस में यूज होती है. नेक्स्ट हम जो सैंड प्लस कोकोपीट. सैंड क्या करता है, इजीली उसको पानी को निकाल यूज नहीं होता, इट जस्ट प्रोवाइड स्पेस इन द pot, and cocopeat holds water for you, cocopeat. And the last portion we need something to cover on, so we can use leaf molds. Okay, we can use any of the used leaves so that top soil पे वो evaporate ना हो जाए. So we need to conserve the water, so for that we need to top layer, ताकि हमारी न्यूट्रिशन भी मिलता रहे प्लांट्स को, मोर ओवर की इवेपोरेशन ना हो पाए. तो वेजिटेबल गार्डनिंग में दिस इज द बेसिक जो सॉइल यूज कर सकते हैं. सॉइल शुड बी एल्यूवियल सॉइल विद, और इफ यू आर लिविंग इन सिटीज, तो सिटीज में इट शुड बी डन लाइक mixture of sand and soil 50%, and other you can use this. Along with that you can use like time to time you can give DAP. Interested into home like organic gardening, you can always go for the compost kitchen. So yeah. Thank you so much, Aditya, for the detailed explanation. That takes us to the next question. What soil to use for germinating seeds? Okay. Needs, we have like very basic rule, like पहले टू डू जर्मिनेशन ऑफ सीड्स करा करते थे, और काफी एक्सपेरिमेंट्स रहते थे. तो उस जैसे हम छोटे होते भी करते थे कि साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में हम कॉटन में रख के भी जर्मिनेट करवा लेते. फॉर द सक्सेसफुल ग्रोथ ऑफ द प्लांट वी नीड टू हैव समथिंग लाइक ज़्यादा टाइट ना हो, जो कि जो इरप्शन होना है सीड में से उसमें आए, तो इसलिए हम थोड़ी लूज सॉइल को यूज करेंगे. लूज सॉइल में हम आई
generally use, like, this is my rule. I use like ट्रे लेकर उसमें I fill coco or you have seen DAP granule. Of the DAP granule, like take a DAP granule and break it into half by breaking by a hammer or something like that. Take half of the DAP granule into the egg tray along with the coco peat and then germinate your seeds inside the soil. So soil loose रहेगी है वो होल्ड करवा लेगा अपना अच्छा जो रूट्स बनती हैं न्यू रूट्स बनेंगी जो वो होल्ड भी अच्छा आएगा प्लांट का मोरोवर लूज सॉइल है तो न्यू जो ट्विग्स निकल रही हैं उनको सॉइल से बाहर निकलने में आसानी होगी कन्वीनियंट और दिस इज लाइक मोस्टली यूज मेथड अदर किसी कॉटन में या फिर किसी और लूज सीड्स में हम सीड्स को जर्मिनेट सो दिस इज about germination of the seeds and which is to be kept in mind is always use coco peat with half broken DAP अगर लाइक हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग भी कर रहे हैं तो वी शुड कीप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं तो इनिशियल स्टेजेस में DAP अगर हम ऐड प्लांट्स को तो इट वोंट अफेक्ट मच टू द प्लांट सो I consider the first stages of the plants is okay, but using it in more amounts, which goes same for the big plants as well. Okay, that was amazing. Okay, so let's take our next question. How to grow microgreens at home without soil? So you have talked about soil for germinating seeds for vegetables, different है, roses के लिए different है. So can you tell us कि अगर बिना soil के कुछ grow करना हो तो कैसे करेंगे? Okay. So इस क्वेश्चन को हम टू वेज में ले सकते हैं एक में आपको अपना कन्वेंशनल वेरी सक्सेसफुल मेथड की बात कर लेंगे और दूसरा जो आपने पॉइंट बताया कि विद ग्रो करना वी कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल ओके Yeah, okay. So whenever we have to grow like what I use for my कोई भी शैलो ट्रे ले ली एक ट्रेज आती हैं जो हम पॉट्स के नीचे रखते हैं या कुछ वैसी शैलो ट्रे को लेकर हम क्या कर सकते हैं उसमें कोकोपीट डाल सकते हैं उसमें हल्का सा बिल्कुल 1 या फिर 2 ग्रैन्यूल्स ऑफ DAP डालो और सबसे पहले उस कोकोपीट के मिक्सचर को हम सन में माइक्रोवेव में हीट होती है खाने वाली चीजें इन द सेम वे सन में बेक सेम वे सैंड या फिर कोकोपीट को बेक कर लेंगे दैट कैन टेक वन मेरा सामान गार्डन में ऐसे खुला ही पड़ा रहता है तो वो खुद ही बेक हो जाती है सो ये स्टेप मैं मिस कर देता हूँ क्योंकि माय सैंड स्टेज देयर लाइक दिस ओनली सो बेक करना इज इम्पोर्टेंट इससे क्या होता है सॉइल और सॉइल का रिचार्ज होना आई कंसिडर इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल स्टेप्स सो सॉइल को रिचार्ज करवा लेते हैं पहले और उसके बाद उसमें कोई भी फेन्यूग्रीक यूज हो रहा है ब्लैक ग्राम यूज हो रहे हैं व्हाइट ग्राम्स यूज हो रहे हैं और कार्ब्स हो रही हैं मोरोवर the people who go to gym go for workouts and stuff it's pretty important for them so what I prefer is बाहर से माइक्रोग्रीन्स खरीदने से ग्रो इट एट होम बहुत ही न्यूट्रिशियस माइक्रोग्रीन्स हाँ लेट्स कम टू दिस पॉइंट एज वेल इसकी होते हैं माइक्रोग्रीन्स न्यूट्रिशियस इसलिए होते हैं क्योंकि जब प्लांट ने पेरेंट प्लांट ने सीड बनाना होता है तो इट पुट्स मच इट्स एनर्जी टू दैट सीड क्योंकि उसने ही अगली जनरेशन स्टार्ट करनी है इस सीड दिस सीड हैज अ मैक्सिमम एनर्जी इन इट और उस एनर्जी को जब हम हमारा उसमें से शूट और रूट निकलती है तो द एनर्जी और द nutrition at its peak so microgreen has the highest amount of nutrient in any of the plant states so I really suggest everyone to have
So coming back to the question. So microgreens कोकोपीट में हमें डालने के बाद कोई भी सीड्स डालो, पल्सेस डालो, we should wait it 3 days for start of the germination. So what we can do is हम किसी मिस्ट का या किसी स्प्रेयर का यूज करके और हम उससे ही वाटरिंग करेंगे. नेवर एवर गिव विद अ वाटरिंग कैन या फिर पाइप से या फिर मग से, क्योंकि वो क्या करेगा, सीड्स की जो सेटलमेंट है उसको खराब कर देगा, जो कि सीड्स के ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है. सो always use a mist and always will create humidity. The more the humidity you will have inside your soil, the faster will be greens. Cover it after 2 to 3 days. You'll see yourself like they'll start growing. You can see there's a video on my IGTV as well. I have grown full of the microgreens, beautiful trusty, and uh, and like to see it. So this is the conventional method. It will take a week to grow fully, and then they'll regrow themselves. So use it for 2 to 3 times. You'll get better in the market. काफी ज्यादा हमारे पास है. ओके, तो एक बारी मैंने उसके भी माइक्रोग्रीन्स उगाए थे. दे आल्सो गोज वेरी वेल. ब्लैक ग्राम्स के बहुत अच्छे होते हैं. So now coming to ma'am's question now. So ma'am has asked me how to grow microgreens without the soil or without the conventional method. So hydroponics, very successful technique going on nowadays. So hydroponics का use कर सकते हैं. किसी भी एक कंटेनर में you can take water, और वाटर हमारे पास फ्लोइंग होना चाहिए. तो जैसे मोटर्स यूज हो सकती हैं, छोटी कोई भी 50 कैन गेट मोटर, और वाटर को मूविंग कर लो किसी तरह से. ठीक है, वाटर आ गया और वाटर के ऊपर एक थर्मोकोल लगा लो. थर्मोकोल में कुछ होल्स करके दैट, सो इट विल एक्ट एज अ soilless medium for the growth of the plants. Works this way. Hydroponics is a very successful method. Many scientists, like I have seen you as well, where I was studying priorly at the agricultural university, I've seen like practicing the aeroponics as well. Like they were putting the additional content in the air, only in the mist, in the form of the mist, and the seeds were that are like very high end scientific techniques. But yes, hydroponics is really successful method of growing plants nowadays. So we can surely practice that. In many setups of hydroponics, they are available in the market. You can try it as. Thank you so much, Aditya, for the detailed and very precise explanation for this answer. Okay, that takes us to our last question for today. How Okay, to ma'am. prepare a garden for winters, since we are approaching winters now. So if gardeners want to prepare their soil or prepare their garden to be ready for the extreme cold weather, how we can do that? This is like my favorite question. Like Okay. I preparing winter garden because in winter we get like hundreds of varieties of I love. Like you can get them like 20 rupees, 30 rupees plant, and I like settle at 100. So winter garden is my favorite thing to talk about. But yes, mentioning once more, we have another option for growing microgreens, that is in this loose aggregates of clay. So it looks like this, very hollow, not able to focus it. Yeah, we can see it. We can So see it it. looks Yeah. like this. Yes, you can always go for leca as well. Leca is also very successful method. It's available on the online store. You can always get it and use the leca and use it. It also acts very nice nowadays. I have grown on perlite as well, the microgreens. Hydroponics, perlite, these
leca, and the sand. So these are the four methods of growing microgreens. Okay, now coming to the very next question, winter garden preparation. So winter garden preparation is a process to have a whole year a smooth garden. Like gardening smooth process. Like एक सीजन से आप स्मूथली काम शुरू करोगे, the whole year you will get very nice harvest from your garden and everything will be very nice. But what I think, or as a gardener, like long term gardener, what I believe is, अगर आपका विंटर उसमें कमी रह जाती है या कहीं खराब हो जाता है, तो the whole year somewhere like destroyed. You don't get that top notch garden as you can. Extra garden preparation is very crucial step for every gardener's life and be practiced. So विंटर गार्डन प्रिपरेशन में सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि जो भी हमने प्लांट यूज करना है वो सॉइल में ही हमने उगाना है. तो सॉइल कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं. फॉर विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स तो वेरी लूज सॉइल इट शुड बी देयर. तो सैंड तो एटलीस्ट 40% टू 40 शुड बी देयर. ठीक है. और नेक्स्ट हम बाकी 40% सिंपल, और बाकी we can go for the cow dung manure. It is very good for winter plant foliar growth. The more will be the buds and the more will be the flowers. This is a very key rule. Many people on YouTube will say, go for this. It has potassium mineral. Like potassium is basically responsible for flowering. Phosphorus and potassium. It has potassium. Go with this fertilizer. Your flowering will increase. But what's my fundamental of doing this is have the nitrogen fertilizer, and after having foliar growth you can have more buds on the plant. So it comes this way. So yeah, recharge your soil. Step, prepare your soil by recharging your soil. For recharging you need to have like amount of pots, so prepare that much soil accordingly. Okay, so prepare 45% of the sand along with 40 to 45% of the common soil in your area, irrespective of the place. Here in Punjab, I'm from Punjab, so in the alluvial, which is the most fertile soil even, so we are okay with using alluvial soil. States like as if the Maharashtra is having red soil and other states are having black soil, and for that we need to have like a certain sort of composition of the soil. For that, 40% sand, 40% soil, and rest you can use the add-ons or the amendments you can use. There are various soil amendments, जैसे कि अभी हमने बात की थी detritus soil, जो कि हमारे soil की composition में change लाता है ताकि हमारी जो soil है उसकी quality better, हमारी harvest better हो सके. तो soil amendments use कर सकते हैं perlite, leca, leaf detritus मैंने अभी बताया, leaf मोल्ड कंपोस्ट यूज कर सकते हो. गार्डन में पत्तियों को हम यूज कर सकते हैं क्रश करके. हमारा होम मेड वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजिंग व्हिच कैन मेक the quality of the soil higher, so we can use this. The soil will become very good. Okay, so recharge the soil. First step, selection of the plants or the selection of the seeds. Always and always trust for the like I have bought many times online seeds as well, like from online stores, but the results were not that satisfactory as we get from but yes, so matlab, this is like not a sponsored sentence, I would say. Tested it because I am with the affordable organic store since 1 year. So their products like काफी चीजें try की and they all of them work. Even the company has sent me rosemary seeds. So I was like कि चलो आप try it. And I was not expecting that ये rosemary के seeds grow करेंगे. Rosemary is a trending herb में हम इसको
काफी चीजों में यूज कर सकते हैं। तो रोजमेरी एंड कायमोमिले यू हैव आल्सो सेंड, ये दो आपने भेजे थे, तो आई हैव ट्राइड इट एंड दे रियली लाइक स्प्राउटेड आउट एंड became with the results like I literally got because Indian conditions में ऐसे seeds ask, but चलो वो मेरा पार्ट था, बट जिसने सीड देने हैं the seller or should be there, so you can always go for the affordable organic store. The seeds are true, it's my own experience. So seeds हमारे पास जो होने चाहिए ट्रस्टेबल सोर्स से होने चाहिए, नर्सरी या फिर you have a gardening community around you. मैं अपनी अपनी जो सोसाइटी है उसमें उसमें बेसिकली ladies are, so I have made like a group of aunties along with me. So what all we do, we share things with each other, and we share what all knowledge we have. So they share seeds, like it's always there. I have given them chamomile seeds as well, and many of the seeds like bottle gourd seeds and various seeds like those. Lotus seeds, yes, lotus seeds also. I have that lotus plant at my home as well. So germination rate here, so selection of the seeds. Now coming selection of the plants. To never get overexcited seeing to plants. Like this is the gardeners. I can, you all can feel it, or you all can majorly feel it. We get traumatized and we get very excited that way only. So कभी भी plant देखकर for the smaller saplings. Smaller saplings adapt to your soil very fast. उनका root structure काफी ज्यादा डेवलप हो चुका होता है, और रूट स्ट्रक्चर डेवलप छोटे सैपलिंग्स का। तो अगर हम उनके मीडियम में चेंज करते हैं, उनके सॉइल में चेंज करते हैं, तो दे वो, तो इसलिए छोटे प्लांट सिलेक्ट करो। नेवर गो फॉर द प्लांट्स जिनमें फ्लावरिंग हो, गो फॉर दोस प्लांट्स, कभी भी नहीं, क्योंकि नर्सरी में उस टाइम पे फ्लावरिंग हो रही है, तो अल्टीमेटली द इवेंचुअली द फ्लावर्स विल गेट शेड ऑफ, और हमारे पास सिर्फ प्लांट्स which are developing buds. Okay, it should be small, it should have developing bud, it should have healthy foliage. ठीक है, अच्छा foliage होना चाहिए। foliage means पीछे जितना भी गार्डन है, this is a foliage garden, so nice foliage होना चाहिए हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट है, जब घर लेकर आए तो घर लेकर आकर उसको अपने गार्डन में एक्लेमेटाइज करवाने के लिए keep the plant in your surroundings, in your garden, so that they get habitual to what the location or what the surrounding is. So always get your plants acclimatized rather than yourself. So do it. Transplantation. So the day of transplantation, you will feel the plants are pretty healthy, that you're doing healthy. Okay, so let it acclimatize for some few more days, but healthy, transplant it, remove the outer plastic ki polythene, the pot, and cover the surrounding area, so you'll see very, very nicely. For starting few days, keep your plants in shade, do not expect, yeah. The fact is, in winters the sunlight is not that much exposed. We'll keep it in the shade, or somewhere where the partial sunlight comes. Okay, now coming to the cycling garden of the whole year round. I have missed that point. It is very important. गार्डनिंग में जब हम स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास एक टाइम ऐसा आता है कि विंटर गार्डन खत्म से, जितने सीजनल प्लांट्स है बेसिकली वो सब खत्म होने शुरू हो जाते हैं, और जो एनुअल भी अपने उसमें गए होते हैं, शॉर्ट ब्रेक पर गए होते हैं, तो वो सब एक टाइम खत्म हो रहा होता है। तो आफ्टर दैट हमारे पास स्प्रिंग सीजन आता है। तो स्प्रिंग सीजन में हमारे पास विंटर प्लांट्स है वो तो खत्म हो जाते हैं, पर जो एवरग्रीन प्लांट्स रहते हैं हमारे पास, जैसे ये टर्मिनेलिया और भी प्लांट्स हैं, तो दिस वे द एवरग्रीन प्लांट्स विल कम। अगर उस टाइम पर मेंटेनेंस की होगी तो इट विल बी लाइक वेरी नाइस की मेंटेन करके रखा है। उसके बाद समर गार्डन आ जाता है,
समर गार्डन भी हमारे पास अच्छा चलता है। बस उसके बाद हमें फर्टिलाइज करना होता है प्लांट्स को। फर्टिलाइज कर दो कभी भी किसी भी फर्टिलाइजर से, एंड देन यू विल बी गुड टू गो। Are the basic things which I'll consider while growing any of the winter garden. Moreover, the story highlight in my Instagram profile, you can always check it. That is preparation of the winter garden. There are reels uploaded as well, so you can always go there for the demonstration. And but not the least, uh, winter gardening is like a very crucial step for the whole year so much. That was amazing, Aditya. Thank you so much for very detailed and very easy to understand explanation for the preparation of winter gardens. So with this, we come to an end of our questions for today. Thank you so much for your time. Thanks for having me. Most welcome. So, I would like to thank all our viewers for joining us today, and I would like to remind you once again, if you want to follow Aditya, his Instagram handle is underscore the underscore plantomaniac underscore. The link is in the description box below. You, if you want to interact with him personally and learn more about gardening, you can surely contact him there, and he'll be more than happy to help you. So, thank you everyone. I hope you've enjoyed the session as much as I did today. It was a Yes, pleasure learning so much about the soil. And if yes, you ma'am. are also a plant lover and you like to answer some very basic questions about plants, then please write to us at info at the rate theaffordableorganicstore.com, and we will feature you in our next live. So, till then, we will be bringing you more amazing speakers and answering some very basic questions on gardening. So stay tuned for more wonderful information on gardening for our next Saturday. And thank you everyone for joining us today. Thank you, Aditya, once again. So much, ma'am. Okay, guys. Bye bye. Bye.